जिसमें जो है आप काउंसलर के साथ डे टू डे यू कैन वर्क एंड they'll give you homework exercises and उसमें जो है you can address your anxiety. If anybody has any other question, okay, so Zoya has said my doctor best friend. Zoya, do you have a question? आपको फिक्र होती है कि नहीं होती है? अच्छा, so if anybody has any other question, hi Amber, how are you? If you have any question, I would love to answer them. अगर किसी को daily basis पे जो है वो anxiety होती है, I can share a personal event or personal experience here. Many years ago, I felt I did not even know, although I was a psychology student and I didn't know what a panic disorder is. अक्सर लोग जब उनको परेशानी होती है और एकदम से जो है वो they shut down, तो वो कहते हैं कि मुझे panic attack हुआ था. हम बड़ा लूजली इस टर्म को यूज़ करते हैं. ये हमें पता नहीं होता. समटाइम्स हम वी आर नॉट बेटर एजुकेटेड, हमें इतना आइडिया नहीं होता कि एक्चुअली पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है. सो आई वाज 22 years old. आई वाज डूइंग माय मास्टर्स इन साइकोलॉजी. और फाइनली ये प्रोजेक्ट की फर्स्ट सबमिशन थी. इट वाजंट इवन द फाइनल सबमिशन. तो फर्स्ट सबमिशन थी तो आई माय आईज जस्ट ब्लर्ड आउट. You're welcome, Roma. If you have any other questions, please feel free to ask them. I'd be happy to answer them as much as I can on this live video. So, when I was 22 years old, तो एक दिन जब हमारी मास्टर्स की फाइनल ईयर सबमिशन थी तो उस दिन my eyes blurred out. अच्छा, उस टाइम तक मेरी आई साइट वीक भी नहीं थी जैसे कि अब है. I have to have a number in my eye all the time. And my eyes just blurred out. I could not see anybody, anything. Like it was that cliche funny situation कि लोग कहते हैं अच्छा ये दो उंगलियां ये तीन. I couldn't tell कि ये दो उंगलियां ये तीन. I could not tell who is in front of me. So yeah, my eyes blurred out and I had a brain fog. At one point of time, I did not know what to do. मुझे कुछ पता नहीं था कि प्रोजेक्ट की प्रिंटिंग कहाँ से करवानी है, क्या कैसे करवाना है. While a lot of people think कि this is regular stress की वजह से जो है वो आपकी nerves जवाब देंगे. This is a classic panic attack, right? Or second time I experienced it last year out of nowhere. Daily basis पे stresses थे अपने startup के. There was a big event that we were going to do and उसकी थोड़ी सी anxiety थी. I started noticing 3 days ago, one day I woke up and I had an extreme high heartbeat and इतनी ज़्यादा थी कि I could feel it in my throat. And at the same time, I had this extreme dizziness as well. A lot of people could term it as lethargy. Very commonly, thank you, sir. Um, Many people think lethargy and extreme exhaustion can seem like it, but this is also a classic symptom of a panic disorder. So on a daily basis, a lot of people experience anxiety, and they experience panic in different situations as well. Not necessarily means that it's a disorder, but that also does not mean that this is not something to worry about. If you feel कि आपको परेशानी होती है और वो रहती है, उसकी वजह से आपकी सेहत के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है, या आपके प्रोफेशनल जो है वो कनेक्शंस या आपका प्रोफेशनल आउटपुट, आपकी प्रोफेशनलिज्म ख़राब हो रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो एन इशू. Then आपके interpersonal relationships with your husband, with your children, your friends, your family, अगर वो ख़राब हो रहे हैं तो that means it's an issue. Amber has written something. Amber says that I get anxious when I have so much work to do and I'm not able to manage with kids. I try to relax, but I still can't relax because so many things on my mind. Eventually, there are kids crying and so much work undone, and then me having anxiety. What would you suggest? Please help. Acha. I would like to share a small story with you, which is actually true. 3 years ago, I got my entire family to attend family counseling, which is a 100-day program at Willing Ways. So my father actually used to refer to this a lot. Like वो counselor से family counseling के दौरान वो रोज़ाना कहते थे मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, बच्चे हैं, मैं क्या इतने सालों से संभाल रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, बार बार वो कहते थे. तो काउंसलर उनको बार बार रिप्लाई करते थे कि तो सर आराम कर लें. तो कहते ये क्या बात हुई, आराम कर लें, लाइक रोज़ाना मैं सोता तो हूँ, वो आराम ही होता है ना. तो होता क्या है कि हमारी रूटीन मतलब शुरू से जो हम लोगों को देखते हुए आए हुए होते हैं कि सुबह उठें, आप काम करना शुरू करें, बच्चों को संभालें, फिर उसके बाद आप जो है वो घर को संभालें, अपने काम देखें. हम डे टू डे जो है वो सारा दिन इतने बिजी रहते हैं और
हमने हमेशा लोगों को ये करते हुए देखा होता है कि आप जब रात को 8 घंटे की नींद लेके आप जब उठ जाते हैं तो उसके बाद आप सारा दिन काम करना शुरू करते हैं, तो उसके बाद अ नेचुरल टाइम टू स्लीप इज at 10 or 11 o'clock. Some people sleep at like midnight, 12 o'clock as well. कुछ लोग एक एक दो दो बजे तक जागते हैं. तो एक हमारा नेचुरल पैटर्न बना होता है कि हमने रात को ही सिर्फ गहरी नींद लेनी है. हम लोग दिन के दौरान आराम नहीं करते हैं, या हम अपने डिफरेंट टास्क के दौरान आराम नहीं करते हैं. अच्छा, हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होती है. कुछ लोग नहीं थकते हैं, तो उनके लिए नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल जो है वो काम कर जाता है कि लाइक वो सुबह को जागते हैं, सारा दिन काम करते हैं, सारे चोर्स अपने कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद रात को सोते हैं. बट एवरीबडी रिस्पॉन्ड्स टू स्ट्रेस डिफरेंटली. अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपको स्ट्रेस ज़्यादा होती है, आपको एनजाइटी ज़्यादा होती है, आप ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, आप ज़्यादा लेथार्जी और ज़्यादा एग्जॉशन महसूस करते हैं, तो फिर आप यूँ करें कि आप आराम के अपने जो आवर्स हैं आप उनको डिवाइड कर लें. आप यूँ करें कि आप अपने हर मेजर टास्क के बाद आपने थोड़ी देर आराम कर लें. अच्छा, आई नो कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. मेरी अपनी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी होती है. लास्ट डेज आई डिड दिस one day in my life and even I was shocked that I was doing so many things. Like I cook, and I take care of the house and I work and fitness routine and my socialization. And with Lahore's traffic, you have to be everywhere and like meetings and laughter therapies and patients. बड़ा मुश्किल हो जाते हैं मेरे लिए भी. But then what I do is कि I have designed my day in a way, because मुझे भी ऐसा लगता है कि ever since I've crossed 30, I get exhausted very quickly. तो ये होता है कि I keep rest after every single major activity. Like for example, when I wake up and I take care of the house, like I manage the house and I cook meal for my father and I make my meals for the day. I keep on a specific low carb diet. तो उसकी वजह से I take my meals with me to work. तो उसके बाद मैं before going to work मैं 10 मिनट जो है वो बेड के ऊपर लेटती हूँ. तो it feels very it can seem very silly to different people कि ये क्या बात हुई कि लाइक आप सुबह सुबह काम पे जाने से पहले आप दोबारा बिस्तर में लेट गए. बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़रूरत होती है. देन उसके बाद इफ़ आई हैव मीटिंग्स, तो मैं जब मैं मीटिंग से ऑफिस आती हूँ तो मैं इंस्टेंटली काम करना नहीं शुरू करती हूँ. आई गो टू द डाइनिंग एरिया, आई टेक कप ऑफ आइदर टी. ज़्यादातर तो मैं पानी पीती हूँ. आई गिवन अप टी. So I drink a glass of water and I just look outside, and this is my 10 minutes of mental relaxation. Then when I start working on something, तो घंटे के बाद I take another small open eye nap के like मैं वैसे ही बैठ के बस I'm just looking at things, or I go and I take a walk or something which is mentally relaxing for me. इससे फ़ायदा ये होता है कि जब मैं पूरे दिन में I'm able to do a lot of things. Um, and with breaks, you can actually perform well and you can do more. Recently, I was watching this documentary called The Goop Lab by Gwyneth Paltrow. And उसमें there's an expert जो कि बताते हैं कि जब आप deep breathing करते हैं तो उसकी वजह से आपकी बहुत सारी जिस्मानी बीमारियां ठीक हो सकती हैं और psychological issues. तो उसमें वो एक छोटा सा experiment करते हैं. वो दो लोगों को कहते हैं कि आप जो है वो डिप्स लगाएं, ठीक है, आप एक्सरसाइज करें. तो व्हेन दे आर डूइंग दैट, तो जब वो 25 कंप्लीट कर लेते हैं वो कहते हैं कि आप मज़ीद कर सकते हैं. वो कहते हैं नहीं, हम नहीं कर सकते. तो कहते हैं अच्छा ठीक है, आप बैठें और आप अब डीप ब्रीदिंग करेंगे. जब वो डीप ब्रीदिंग करते हैं कुछ देर के लिए और कहते हैं कि अब आप दोबारा करें, तो वो दोबारा से करते हैं. तो दे कैन डू मोर. नाउ दिस टाइम दे कैन डू 35, राइट. सो रेस्टिंग, डीप ब्रीदिंग हमारी मेंटल पीस जो है it increases our mental and physical ability to do things, right? Then at the same time, sometimes we experience anxiety because we keep all our stresses and anxiety and all our issues to ourselves. हम लोग अपने we don't reach out to our support network. हम लोगों को नहीं बताते how are we feeling, and we are experiencing that stress alone. Sometimes we feel कि हमने अगर एक या दो लोगों को बता दिया जो already हमारे surrounding में होते हैं, like in Amber's scenario, I feel कि like if you share that with your husband, who's like a friend to you, that is still not enough. You can have a support system, like you can talk to your sisters, you can talk to your friends. You should have friends you can call in the middle of the night and tell them like I'm feeling extremely vulnerable. I hate the fact that I'm a mother of two toddlers and like life is very difficult. What to do?
At the same time, you need to have some excitement in your life as well, some pleasurable activity as well, and something which is most important is exercise. जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी इंडोर्फिन्स रिलीज करती है, स्ट्रेस केमिकल्स को जो है वो रिमूव करती है, एलिमिनेट करती है. व्हेन यू एक्सरसाइज यू फील लाइटर. फिजिकल लेवल के ऊपर जो है आपके एंजाइटी के सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई सजेस्ट यू ऑल्सो कि अगर आप चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आप उनको कम कर दें. उसकी वजह से फिजिकल लेवल के ऊपर जो है वो आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी. And you can always personally discuss that with me in detail, and I will be able to help you through it, because once you know the journey, so here I'm able to help more. Something that I would like to share is कि हमारी बहुत सारे जो हमारे psychologically emotional patterns होते हैं उनके जवाब हमारे बचपन में मौजूद होते हैं. हम बचपन में जैसे स्ट्रेस को, एंजाइटी को के लिए रिएक्ट करते हैं या जैसे उसको एड्रेस करते हैं, हम जैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं अपने बचपन में, हम एग्जैक्टली उसको एडल्ट लाइफ में भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं. लाइक बचपन में इफ़ वी शट डाउन ड्यूरिंग एंजाइटी और स्ट्रेस और एनी स्ट्रेसर, तो हम बड़े होके भी उसको जो है वो वैसे ही हम उसको एड्रेस करते हैं कि हम लोगों से डिस्कस नहीं करते हैं. अगर बचपन में हम रोते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं, तो हम बड़े होके भी उसको ऐसे करते हैं. अच्छा, बचपन में जो हमारे पैटर्न बनते हैं वो नेचुरली बन जाते हैं हमारे पेरेंट्स की वजह से, हमारे सिचुएशन की वजह से. लेकिन बड़े होके हम उन पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं. वो ऑटोमेटिकली हमारे साथ ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन हम उनको प्रोफेशनल हेल्प के साथ मिलके हम उनको चेंज कर सकते हैं. इफ़ यू फील कि आपको एनजाइटी होती है तो इट्स फाइन. एनजाइटी एक नेचुरल बॉडी का रिस्पॉन्स है. अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो नेचुरली अब एनजाइटी तो एक्सपीरियंस करेगी. ये तो ऐसे ही है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा, आप रोज़ाना खाना खाते हैं तो आप वेट गेन तो आप एक्सपीरियंस करेंगे, अनलेस आप मेरे उन कुछ दोस्तों की तरह जिनको बिल्कुल वज़न ही नहीं चढ़ता. तो आप नेचुरली एनजाइटी भी एक्सपीरियंस करेंगे अगर आप जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में रहे हैं या अगर आपकी रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी. बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि यू कैन चेंज द वे यू रिस्पॉन्ड टू एनजाइटी. यू कैन ऑलवेज चेंज योर पैटर्न्स, यू कैन मेक देम हेल्दी. कुछ हमारे पैटर्न्स इन रिस्पॉन्स टू एनजाइटी अनहेल्दी होते हैं. कुछ लोग जो है वो अपने स्ट्रेस को फूड के साथ कोप करते हैं, कुछ लोग उसको सब्सटेंस के साथ, लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ लाइक कोक एंड सोडाज एंड ओवरली सोशलाइजिंग, शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं. Amber said, thank you so much. Thank you so much, Amber, for appreciating it. Amber and I graduated together from psychology, and Amber was our topper in our class. So I'm always glad when my friends, especially, they show a lot of faith in me, because generally it's very uncommon in psychology. But yeah, so I was saying कि आप अपने patterns जो है, you can change those patterns at any point. अगर आपके unhealthy patterns हैं, you're coping through something unhealthy, तो आप उसको healthy में change करें. ठीक है, like for example, जैसे I mentioned कि if you are coping with anxiety through food or substance or like drinking sodas, आपने comfort behaviors अगर आपने अपने create कर लिए और आपने उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वो इम्बैलेंस्ड हो गए, आपको पता तब ये चलता है कि ये अनहेल्दी है जब उसके बगैर आपको एनजाइटी होना शुरू हो जाती है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने खाना, अपना डाइट पहले तो अच्छी की उसने एनजाइटी को कोप करने के लिए, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा वो फूड कोपिंग मैकेनिज्म के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया कि इफ़ यू टेक फूड आउट ऑफ द सिचुएशन तो वो बहुत ज़्यादा बेचैनी और एनजाइटी महसूस करेगा. तो दैट मीन्स कि दिस हैज़ बिकम अनहेल्दी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समबडी इज़ फीलिंग लोनली तो हम उसको कह सकते हैं कि आप नेटफ्लिक्स देख लें. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि अब वो नेटफ्लिक्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट ही हो गया, इफ़ यू टेक Netflix out of the situation, and that person will go into extreme stress and extreme anxiety, so that means कि it's become unhealthy. कोई भी हैबिट अगर आप अपनाएं तो आप उसको balanced way में रखें. Like your life should be a balance of all the things: a good sleep, a good profession if you like to work, और इसके अलावा a good healthy routine. एक्सरसाइज भी करें तो ऐसे नहीं है कि 3-3 4-4 घंटे करें. रोज़ाना आधा पौना घंटे की एक्सरसाइज इज़ ग्रेट.
eat healthy food, but do not depend yourself or do not cope with food. Socialization अपनी रखें, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि आप अपने friends के ऊपर depend करने लग जाएं. Um, Thank you, Bobby Khala. How are you? I'm so glad you could join from Miami, right? You're in Miami right now, I think so. Um, so yes, I was saying कि किसी भी चीज़ के ऊपर आप अपनी dependence create ना करें. Try to जब आपको लगे कि आप एनजाइटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको फिक्र या बेचैनी होती है, तो जितनी भी हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं, आप उनका एक बैलेंस क्रिएट करें कि मैं रोज़ाना ये क्या करूँगा. A routine always helps. Something that I would also like to mention is self care. सेल्फ केयर का कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारे लोगों को अक्सर नहीं पता होता. वी ऑलवेज व्हेन वी थिंक अबाउट बीइंग अ केयरिंग नेचर और अ केयरिंग पर्सन, तो हम हमेशा सोचते हैं कि लोगों का ख्याल रखना. एज अ सन और अ डॉटर हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि हम अपने पेरेंट्स का ख्याल रख सकें, अपने बड़ों का ख्याल रखें. जब when we become parents तो हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने बहन भाइयों का, दोस्तों का, पीपल एट वर्क. अगर वी आर इन प्रोफेशनल सिचुएशन तो उसमें होता है कि हम अपने कस्टमर्स का ख्याल रखें. एज अ लाफ्टर थेरेपिस्ट, फॉर मी अ प्राइमरी agenda or like primary goal for me every single day is to make people laugh. Um, but the thing is a caring person is also somebody who prefers self care as well, who knows about self care as well, जो अपना भी उसी तरह से ख्याल रखे जैसे कि वो किसी और का रखते हैं. और ये सिर्फ मैं फिजिकल सेंस में नहीं कह रही हूँ, ये इमोशनल सेंस में भी है. लाइक जब हम किसी का ख्याल रखते हैं तो ना तो सिर्फ हम उनकी डाइट का, उनके सोने जागने का ख्याल रखते हैं, हम ये भी सोचते हैं कि ये सो रहा है, शोर ना किया जाए. ठीक है, तो आप उसको पर्सनल सेल्फ केयर में ऐसे चेंज कर सकते हैं कि जब आप सो रहे हैं तो आप प्रेफर करें आप लोगों को बता के सोएं कि कोई शोर ना करे. अपनी डाइट, जैसे आप किसी और की डाइट का ख्याल रखते हैं, आप अपनी डाइट का भी वैसे ही ख्याल रखेंगे. अगर आपको लगता है कि आपका कोई लव्ड वन, जैसे हमारी अम्मी जो थी उनको डायबिटीज़ थी, तो हम उनका ख्याल रखते थे कि आपने ये नहीं खाना. अम्मी लड़ती थी कि मुझे क्यों बार बार बताते रहते हो. तो आपने अपना भी वैसे ही ख्याल रखना है. आपने ये नहीं कहना कि नहीं अभी मेरा दिल कर रहा है तो मैं खा लूँ. जो चीज़ आपकी डाइट के लिए अच्छी नहीं है आपने वो नहीं खानी है. एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हमारे दोस्त जब हमारे पास आते हैं तो हम उनको बड़े मशवरे दे रहे होते हैं, ये चीज़ तुम्हारे लिए टॉक्सिक है, ये जॉब तुम्हारे लिए टॉक्सिक है, ये इंसान तुम्हारे लिए टॉक्सिक है, और हम उसे पुश कर रहे होते हैं कि तुम क्यों इस सिचुएशन से बाहर नहीं आते हो. राइट, लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी को एनजाइटी या स्ट्रेस होती है तो हम कहते हैं कि तुम ऐसी सिचुएशन में जाते क्यों, नेगेटिव लोगों में क्यों उठते बैठते हो. राइट, लेकिन हम कभी भी अपने लिए वो चॉइसेस नहीं कर रहे होते हैं. सो अपने लिए भी वही चीज़ चूज़ करें जो आप उस इंसान के लिए चूज़ करें जिसकी आप केयर करते हैं. सो सेल्फ केयर मीन्स कि सुबह से लेकर शाम तक आपकी एक बहुत ज़्यादा तवज्जो जो है वो अपने ऊपर रही है. आपने अपनी सेल्फ केयर में ये भी आता है कि आप सुबह कितने तैयार होके बन ठन के निकले हैं. अगर आप अच्छे दिखाई देंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे, आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे. राइट, जैसे हम अपने बच्चों को सजाते संवारते हैं, हमारी कोशिश होती है कि वो सबसे खूबसूरत नज़र आएँ, सबसे अच्छे नज़र आएँ, सबसे ज़्यादा जो है वो स्टैंड आउट करें. तो हमारी बड़ी मेहनत होती है उसकी तरफ. राइट, सो हमने अपने ऊपर भी एग्जैक्टली सेम वैसी तवज्जो देनी है. रोज़ाना अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छी थॉट्स का इंतखाब करें, ऐसी थॉट्स जो आपको लगता है कि आपके लिए जो है वो बहुत अच्छी रहेंगी. लाइक नेगेटिव थॉट्स को दिमाग में ना लेकर आएँ. ऐसी चीज़ें सोचें जिनसे आपको खुशी होगी, ना कि ऐसी चीज़ें सोचें जिनसे आपको दुख होगा या कोई नदामत या परेशानी आप सोचें. सो आपने अपना ख्याल वैसे ही रखना है जैसे आपने किसी बीमार इंसान का रखते हैं, हम किसी बच्चे का रखते हैं जिसको बहुत ज़्यादा निगहदाश्त की ज़रूरत होती है. जब आप अपना ख्याल उस तरह से रखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारी आपकी एंजाइटीज़ ऑल टुगेदर कम होना शुरू हो गई हैं. ठीक है, एंजाइटी, पीपल हु एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ एंजाइटी, हमारी जो फर्स्ट एड टेक्निक ये होती है कि पहले तो आपकी एंजाइटी मैनेज हो. राइट, इट्स लाइक इफ़ यू आर ब्लीडिंग, सो द फर्स्ट गोल शुड बी टू स्टॉप द ब्लीडिंग. राइट, ज़ख़म को तो हम बाद में अटेंड करते हैं और वो कितने हफ्तों में ठीक हो, दैट इज़ अनदर थिंग. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि सबसे पहले यू हैव टू स्टॉप द ब्लीडिंग एंड you have to start feeling better. Thank you everyone for joining me and listening to this talk. And if you think you still have any questions, so I will be happy to answer them.
Um, Otherwise, I will wrap up the session and do suggest me next time on which topic would you like me to talk, and I will be able to, and I will be very happy to share my thoughts and experience on it. Thank you very much. Bye bye.